नमस्कार मित्रों, ये है पार्ट 27 कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पार्ट 27 स्टोर प्रोसीजर इन एमवीसी पार्ट 4। लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि पर्टिकुलर record of row data of the row how to fetch. Okay, but today we will see how to update the data of the row and how to delete the record. Okay, so in this session you will learn how to create store procedure, how to access store procedure using data entity model, and use of SQL parameter in MVC to update and delete the record. तो ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा जो प्रीवियस पार्ट्स है पार्ट 24, 25 एंड 26 जरूर से देखें ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो की ओर और करते हैं अपडेट और डिलीट का काम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टोर प्रोसीजर में दो स्टोर प्रोसीजर मैं बनाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे कंट्रोल ए मार के मैं डिलीट कर देता हूँ। क्रिएट प्रोसीजर, create procedure and procedure name of your update data. So sp login table का नाम update. Okay, we have to update the data of the login table. sp login update, right? तो अपडेट का स्टोर प्रोसीजर लिखेंगे। ओके, और अपडेट हम कैसे करेंगे, आईडी के जरिए। सो एट द रेट आईडी इंटीजर पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ and what you need to update, you need to update username, so name username and varchar 40. Okay, at the rate password varchar 40, right? Here I have not used comma, so and as update login table, so update login, set क्या क्या सेट करना है, यूजर नेम और पासवर्ड। सो सेट यूजर नेम एंड यूजर नेम इक्वल टू पैरामीटर क्या है, एट द रेट यूजर नेम सेम, सो एट द रेट यूजर नेम और क्या है तो भाई पासवर्ड इक्वल टू एट द रेट पासवर्ड, राइट। कहाँ पे, वेर id इक्वल टू दिस वन, सो वेर id इक्वल टू एट द रेट id, जो आईडी पास करेंगे वहीं पे अपडेट करना है यूजर नेम और पासवर्ड को। ओके, मैं इसे अपडेट कर देता हूँ और स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ। ओके, now create another procedure. So first we refresh the page. Okay, my login update procedure is created. Now I will add new procedure to delete the data. Okay, to delete the row, to delete the row also using @id, id के बेस पे ही हमें delete करना है, right? So create procedure। अब प्रोसीजर का नाम क्या देंगे डिलीट के लिए, sp delete login, right? sp delete login and पैरामीटर बाई आईडी के बेस पे हमें करना है, आईडी इंटीजर। ओके, एस डिलीट फ्रॉम लॉगिन, लॉगिन टेबल से डिलीट करना वेर एट द रेट आईडी इक्वल टू आईडी, सो वेर आईडी इक्वल टू एट द रेट आईडी, राइट। तो पर्टिकुलर आईडी का डेटा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो दोनों स्टोर प्रोसीजर मैंने क्रिएट कर ली है अपडेट और डिलीट रिकॉर्ड के लिए। चलिए अभी मैं इसे ऐड करूंगा
किसमें, डेटा एंटिटी मॉडल में. सो डबल क्लिक ऑन दिस, राइट क्लिक, update model from database, and we'll add the store procedure of update and delete. Delete, update. Okay, so we have added this both store procedure. Now we will have to add entities. For that, go to the model browser, function imports, update, right click on this, edit, use the entities of login table to update the record. Okay, and for delete, right click on this, edit, and insert the entities of the login table to delete the record, right? So both are done. Now we will build this model. Let's go to the controller side. Okay, and we have done this for delete. Okay, we have to, okay, we will delete a particular row, so we will fetch the data for each row, and for that we have already created that code in the details. Okay, this one. So copy this code and paste it here. I will fetch first the particular row to delete the record and use this data to return the model. Okay, and inside of delete method I will use the code to delete the data. For that I will first fetch the id, okay, which row we want to delete in the http post method. Okay, so sql parameter param1 equal to new sql @id इस आईडी का रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है. तो यहाँ पे डिलीट के लिए क्या करेंगे, लॉगिन टेबल से डिलीट करना है, इसलिए लॉगिन. ओके, एंड नाउ हियर we will use to execute the SQL command. Okay, to execute SQL command and use the store procedure. To execute SQL command, here is the row, so copy this row and paste it here, right? To execute the procedure, just we will change the name of the store procedure. So sp delete login. Okay, the name of the store procedure, delete login. Okay, sp delete login, it's okay, from one, and a single or default, so it will delete the record of the single row and return to the index view. Same like that, to update the record we have fetch the row, and I have already done this. Now in the post method of the update I will do this same technique. I will use this same technique to update the record. Okay. For that, what I will do, I will create three parameters for ID, username, and password. Okay. Whatever we have done inside of the insert code, this same one. So copy these lines and paste into the update method. So this one. Okay. SQL parameter param1 equal to new SQL parameter username, and here I will use login table. So login collection dot username, collection dot password, and the third one is to create to fetch the ID. Okay, so just copy this line and paste it here to fetch the ID for update the record. Okay, so I will give here then param3 new SQL parameter and @id.
the id whatever we have passed here, that, and here tables id. Okay, id, right? And we will execute the command using store procedure for update. So to execute the dml command, the same line we will execute. So copy this row and paste it here. Just change the name of the procedure. Okay, so db dot database and dot execute sql command. This line is not correct, this one is correct. So copy this line, okay, db.database.execute sql command and the name of the store procedure to update the data, login sp login update. Okay, so sp login update. Okay, sp login update, right? Using @id. So which parameter we have? First is param1. So as per the record param1, param2, param3, we will add it here. So I will first use @id. Okay, @id, because I need @id first, then @username and @password. But here id is in param3, so I will use first param3. Okay, then मैंने जो ये यूजर नेम लिया है वो परम1 है, तो परम1, एंड देन पासवर्ड है परम2 है, तो ये परम2 का पासवर्ड ये आ गया, राइट? तो ये मेरा कोडिंग यहीं पे समाप्त हुआ है। इसे सेव करते हैं और देखते हैं, लेकिन डिलीट का नहीं बनाया है, तो मैं राइट क्लिक मारता हूँ और डिलीट का व्यू जनरेट कर देता हूँ। मैंने पहले तो डिलीट का व्यू जनरेट कर दिया है और अपडेट का व्यू तो ऑलरेडी मैंने लास्ट पार्ट में जनरेट किया ही था, तो अभी उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं इसे रन करके। तो पहले तो मैं इंडेक्स व्यू डिस्प्ले करवाऊंगा, राइट? ये इंडेक्स व्यू डिस्प्ले हो गया। मैं एडिट पे जाता हूँ और डेटा अपडेट करके देखते हैं। ओके, तो देवेंद्र suppose Devendra Bhai. Okay, I have updated this. Hiral, okay, add Patel. So देवेंद्र निकम की जगह हिरल पटेल ऐड हो जाएंगे। सेव इट। आप देख रहे हैं हिरल पटेल अपडेट हो गया। अब मुझे डिलीट करके देखना है, तो मुझे अगर ये रो डिलीट मारनी है तो मैंने यहाँ पे क्लिक मारा, यहाँ पे इसका व्यू जनरेट हुआ, डिलीट मारा, तो वो रो पर्टिकुलर डिलीट हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही? ओके, चलिए देखते हैं। ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है और इसे भी अगर मुझे डिलीट मारना है तो ये डेटा आ गया और ये डिलीट मार रहा हूँ, तो ये रो डिलीट हो जाएगी। ओके, बैक टू लिस्ट में जाके देख लेते हैं, डिलीट होगी। ओके, सो ये मेरा मैं वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।